In the heart of Guwahati Sijubari locality stands the historic Hazrat Shah Makhdoom Dargah, a living symbol of communal harmony and brotherhood. For generations, people from different faiths and communities have gathered here in a spirit of mutual respect and devotion, reflecting Assam's rich tradition of coexistence. As devotees continue to visit the shrine from across the state, the Dargah remains a powerful reminder that unity and shared heritage are among India's greatest strengths. Located in Sijibari, the Hazrat Shah Makhdoom Dargah stands as a reflection of social and cultural practices that bring communities together. Believed to have been established around the teachings of revered Sufi saint Hazrat Shah Makhdoom Shah, who arrived in Assam during the 17th century, the Dargah has grown into a spiritual and social landmark. What makes the Dargah truly unique is its inclusive character. People from different religions, communities and backgrounds visit the shrine with equal devotion and reverence. करीब 350 साल पुराने हैं। यहाँ राजा रुद्र सिंह नाम के जो राजा थे उस टाइम पे बाबा यहाँ आए थे और उन्हीं ने ये जगह दिए हैं। और उनके बाद जो धर्म प्रसार के यहीं गुजरने के बाद सब लोगों ने यहाँ बाबा के दरबार पे हाजिरी दी और हिंदू मुस्लिम को ये नहीं है, सबको आके यहाँ हाजिरी देते हैं, बाबा से फैज़ हासिल करते हैं। Amid the busy pace of everyday life, the Dargah continues to offer devotees a place of peace and spiritual solace. People visit the shrine with a shared sense of devotion, irrespective of their religious and cultural identity. ये बाबा का माजार में करीब 6 साल से आ रहा हूँ। मुझे जो शांति मिलता है दूसरा जगह में नहीं मिलता। कभी कुछ दिक्कत होने से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मेरा मतलब ख्वाहिश लेके मेरा पूरा हो जाता है। और ये बात है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई चारा नहीं है, सब लोग आता है, सब आदमी अगरबत्ती दिया हुआ जलाता है, इधर में सब खुशी से रहते हैं एक साथ। जब से मतलब गुवाहाटी में जब से आई हूँ, मतलब बचपन से ही तब से मुझे मतलब इस मज़र के बारे में मतलब सुनाई दे रहे थे कि इधर आने से मतलब मन हल्का होता है। अगर कुछ मन्नत है तो वो मन्नत मतलब मांगने से पूरा हो जाता है। तो इसीलिए मतलब मैं बहुत सालों से मतलब कोशिश कर रही थी, मगर अब जाके मतलब इधर मतलब आने का जो हुक्म होता है ना, तो वो मतलब मिला है। At a time when communal harmony remains an important part of India's social balance, the Dargah stands as a living example of how shared faith and heritage can bring people together.